Okay. Assalamu alaikum, everyone. My name is Siptan Jivani. I am CEO and founder of smartchoice.pk. So आज हमारा पहला लाइव सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे तकाफुल को पाकिस्तान में कंज्यूमर ने किस तरह अडॉप्ट किया है और इस सेशन का मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तकाफुल की इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें और आप किस तरह इस इस्लामिक इंश्योरेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं. So let me first introduce what is Smart Choice. So Smart Choice पाकिस्तान की एक इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आकर कंपेयर कर सकते हैं तकाफुल या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को बआसानी. हमने मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज और तकाफुल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स की है ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े है. आप यहीं पे गाड़ी की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीपल और इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज में जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है एम्प्लॉयज़ की, वो भी आप कंपेयर कर सकें और आप इंस्टेंटली ऑनलाइन ख़रीद सकें. So before I introduce our esteemed guest today, let me give you some background. So Takaful जो है वो is also known as Islamic insurance और ये कम्युनिटी पूलिंग सिस्टम होता है. It is based on the principle of brotherhood, bhaichara, and mutual help, which is Bahami Madad. So participants, policy holders can contribute in a fund to help those who need it most in times of financial difficulty. पाकिस्तान में जो तकाफुल की इंडस्ट्री है, it started in 2006. Back in 2006 एक से दो तकाफुल कंपनी शुरू में इस्टेब्लिश हुई जिसमें पाक कुवैत तकाफुल थी, एंड देन पाक कतर फैमिली तकाफुल वाज एस्टेब्लिश्ड. तो पाकिस्तान में दो तरह की कंपनी जो तकाफुल ऑफर करती है, एक जो कि सिर्फ प्योरली सिर्फ तकाफुल के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिस तरह से मैंने नाम लिया जिनका, और इस तरह से और दूसरी कंपनीज है जो कन्वेंशनल भी ऑफर करती है और तकाफुल इंश्योरेंस, तकाफुल प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है. जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में है कि मीज़ान बैंक है, बैंक इस्लामी है जो कि सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, और दूसरे बैंक्स हैं जो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं. So now let me introduce our esteemed guest who has joined us today, Mr. Azeem Pirani. He is the CEO of Pak Qatar Family Takaful. He is the first and the largest, dedicated Takaful group in Pakistan. On the social front, he is one of the founding trustees of SZABIST Trust, जो कि provider है micro insurance lending products का, जो कि sustainable businesses और individuals को help करते हैं. He holds a postgraduate diploma in Islamic banking and finance from the Center of Islamic Economics in Pakistan, and he is an MBA from University of New Brunswick in Canada. Assalamu alaikum, Azeem Saab. How are you? Walaikum salam, Sultan. Alhamdulillah. Thank you for coming to the show. It is our first show, and we decided to start with something which is quite not controversial, but quite misunderstood most of the time, and disregarded as well. So let me first ask you about the most burning question. What kind of misconceptions regarding takaful still exist in Pakistan? यानी किस तरह के लोग अभी भी लोगों को गलत फहमियाँ हैं तकाफुल के बारे में, और आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर, बिकॉज यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 13-15 years, एंड प्लीज एनलाइटन अस. ओके, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थोड़ा सा मैं अपने आप के बारे में को वाज़ेह कर दूं. I was originally in the IT sector since 1995. Then 2005 में फिर मैंने मीज़ान बैंक ज्वाइन की थी. 2007 में जब पाक कतर फैमिली तकाफुल का फाउंडेशन बन रहा था, उस वक्त मैंने पाक कतर ज्वाइन किया था, and I've been with them ever since. So easily over 10-12 years now. Alhamdulillah. यार देखें, पाकिस्तान में सवाल सिर्फ तकाफुल का नहीं है, सवाल तो है इंश्योरेंस का. हमारे मुल्क में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. Given the size of the country and the population that we have, there's hardly any penetration of insurance. So the question comes कि यार ये क्यों है इस तरीके से? क्या हमारे मुल्क में रिस्क नहीं है, कोई खतरे नहीं है,
कोई डेंजर्स नहीं है जिसकी वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका हम जब पाक कतर स्टार्ट हो रहा था तो उस वक़्त हमने एक छोटा-सा एक स्टूडेंट्स के साथ एक प्रोजेक्ट किया था कि लोग इंश्योरेंस क्यों नहीं यूज़ करते पाकिस्तान में। तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट वी लर्न्ड। तो हमने देखा ये कि कुछ चंद लोग थे जो कि इंश्योरेंस नहीं यूज़ करते थे। तो जब उनको कहा गया कि आप बैंकिंग करते हैं, तो कहते नहीं यार वो भी हराम है, हम वो भी नहीं करते। अच्छा ठीक है। तो ये बहुत एक माइनर सी एक सेगमेंट था जो कि कहता था नहीं यार अगर वो शरिया कंप्लायंट नहीं है मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो आउट हो गया। फिर एक सेगमेंट था कि भाई आप इंश्योरेंस यूज़ करते? हाँ, मैं यूज़ करता हूँ, बिल्कुल यूज़ करता हूँ। हमने कहा कि आप बैंकिंग भी करते हैं? जी, हम बैंकिंग भी करता हूँ। तो और उनको फिर जब पूछा गया कि क्या अगर आपको एक शरिया कंप्लायंट ऑप्शन मिलेगा क्या आप वो लेना चाहते हैं? तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि नहीं भाई मैं तो शरिया-वरिया की तरफ नहीं जाता, मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ। तो वो एक अगेन एक छोटा-सा सेगमेंट था। So you have one segment that said only Sharia compliant, and you had one segment that said not at all Sharia compliant. But then you had this vast majority of people in the middle. जब उनसे पूछा गया कि आप इंश्योरेंस यूज करते हैं तो कई लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं करते। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्यों नहीं करते तो उन्होंने कहा कि ये हराम है। अच्छा चले ग्रेट। फिर उनसे अगला सवाल ये जब पूछा गया कि आप बैंकिंग करते तो उन्होंने कहा हाँ बैंकिंग करते। तो उनसे ये पूछा गया कि आप कहाँ कहाँ आपके अकाउंट्स खुले हुए हैं तो उन्होंने सारे कन्वेंशनल बैंक के नाम ले लिया। कहा, चले। और अच्छा आप किस किस्म के अकाउंट्स खोलते हैं कि क्या सिर्फ करंट अकाउंट है फॉर बिल्कुल नेसेसरी ट्रांजैक्शंस या इज देयर समथिंग मोर? तो जी वो तो वहां पर तो मेरे टीडीआर भी चल रहे हैं, वहां मेरे सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चल रहे हैं, मेरा ये भी चल रहा है। तो वी बिगैन टू रियलाइज दैट जो इस्लाम का जो एक बहाना होता है आमतौर पे कि भाई मैं इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये हराम है। तो उससे ये वो हमें स्टडी से ये अंदाजा हुआ कि वो एक्चुअली इस्लाम का बहाना नहीं है। बहाना ये है कि मुझे उसका बेनिफिट ही नहीं पता या मुझे उसका बेनिफिट नजर ही नहीं आ रहा। आई डोंट फील देयर इज एनी बेनिफिट इन मी इन्वेस्टिंग इन एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सिमिलरली तकाफुल प्रोडक्ट एज वेल। तो हमने फिर एक और सर्वे थी जो कि हमने हमने नहीं किया था, वन ऑफ द इस्लामिक बैंक्स डिड इट। और उन्होंने भी कुछ इसी किस्म का उनके पास रिजल्ट आया कि एक एक्सट्रीम था जो कि सिर्फ शरिया कंप्लायंट मांग रहा था और एक एक्सट्रीम था जो कि सिर्फ कन्वेंशनल मांग रहा था। उसके बीच में जितने लोग थे उन सबको यही उन सबका जवाब यही था कि अगर आप मुझे कंपेटिटिव प्रॉपरली सर्विस वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट दोगे और कन्वेंशनल भी वैसा ही है और इस्लामिक भी वैसा है, मैं हमेशा इस्लामिक चूज करूंगा। इसीलिए अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास जाते हैं तो their uptake of Islamic has been fairly decent, especially in their home financing. It's very interesting जब हम उनके हेड ऑफ कंज्यूमर से बात करते थे शुरू में तो बकायदा वो उन्होंने हमसे कहा कि हमने कन्वेंशनल होम फाइनेंसिंग बंद ही कर दिया बिकॉज लोग हर आदमी जब घर की बात आती तो वो कहता है यार मुझे इस्लामिक चाहिए, मैं कन्वेंशनल नहीं लेना चाह रहा। सो यू रियलाइज के जो अवामुल नास है पाकिस्तान की उनका व्यू ये है कि माशाल्लाह वो है तो मुसलमान, अब नॉलेज कितनी है, एजुकेशन कितना है, वो सारे सवालात है जिससे बेसिस पे चेंजेस हो सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज इफ दे आर गेटिंग अ कंपेरेबल प्रोडक्ट, अ कम्पेटिटिव प्रोडक्ट और दोनों कन्वेंशनल इस्लामिक में दोनों में अवेलेबल है, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ देम विल गो फॉर द इस्लामिक ऑप्शन। नाउ इसमें एक जो सबसे बड़ा कैविएट था वो ये था कि द प्रोडक्ट शुड बी competitive in terms of price, it should be competitive in terms of the service that you're getting, it should be competitive in terms of the benefits you're getting। अगर ये चीजों में अगर कहीं इशू आ रहा है या आगे पीछे हो रहा है तो then obviously then they will not care कि वो इस्लामिक या conventional, they'll take the one that gives them the better benefit। But if everything all else being equal, the average Pakistani consumer will always take the Islamic product। फिर again whether it comes from a window or it comes from a dedicated, वहां पर फिर भी you know it's people are a little hazy, they as long as they're getting their Islamic product they will move forward with that। So the point that misconception क्या है, तो एक तो मिसकंसेप्शन ये था कि फंडामेंटल बेनिफिट ही किसी को नहीं पता है। अगर वो बेनिफिट ही नहीं पता है तो फिर वो कैसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो चीज लेने आ जाएगा। और उसके देन नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाते तो एज अ सोसाइटी
there is a significant lack of planning on our part, and especially where it's planning for something that may go wrong. आप किसी बुजुर्ग से जिक्र करें कि भाई आपका वसीयतनामा तैयार है, तो थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाए आप, क्योंकि उसका सामने से रिएक्शन होगा कि क्या आप मुझे मारना चाह रहे हैं, आप क्यों ये पूछ रहे हैं. बट a will is a fundamental aspect of future planning, but we don't do that. Similarly, मैं अगर किसी से पूछता हूं कि भाई आपकी घर की कवरेज की हुई है, आपने घर के लिए इंश्योरेंस या तकाफुल कुछ लिया हुआ है, तो it's almost as if I'm forcing him to think about what could go wrong, and I am, but he refuses to do that thinking himself. तो वो जब वो थिंकिंग ही नहीं करेगा तो वो प्लानिंग कैसे करेगा. और ये हमारी माशरे की बदकिस्मती है कि हम इस अंदाज से नहीं सोचते, और फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि फिर जब वो अल्लाह ना करे वो जब हादसा हो जाता है, तो then we're left high and dry and we have no recourse. And this, I like to give the example of a spare tire. I could make a trip to Hyderabad every week and I will never think of that spare tire. लेकिन जिस हफ्ते में वो मेरा टायर पंचर हो जाएगा आधे रास्ते पे, तो वो स्पेयर टायर बड़ा याद आएगा, लेकिन उस वक्त वो स्पेयर टायर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा मुझे. तो इंश्योरेंस और तकाफुल का भी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप अपनी प्रोटेक्शन को प्लान करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कोई मिसहैप होती है, whether it's life, whether it's health, whether it's motor, whether it's house, whether it's marine, whether it's bank account, whether it's whatever. I will plan that, God forbid, if something were to happen, that I will be financially protected. वो उस अंदाज से वो सोच हमारे माशरे में अभी तक डेवलप नहीं हुई है, और उस पर हम भी काम कर रहे हैं. आप लोगों को भी आई एम श्योर इसी एंगल से काम करना है, क्योंकि you're selling insurance as well. But fundamentally अगर इस मुल्क में ये सोच आना शुरू हो जाए, तो हमारा इंश्योरेंस की अपटेक एंड सिमिलरली तकाफुल की अपटेक बहुत बेहतर हो जाएगी. No, fair point. I think you really covered it well. That we've not just focused on takaful. Is the problem is the fundamental issue of understanding the uncertainty. क्या risk है, उसको कैसे आप protect कर सकते हैं? Should you even think about it or not? What is the best time to think about it? वो जो सारे aspects है, वो तकाफुल में भी चाहिए आपको, इंश्योरेंस में भी चाहिए. वो तो I think your point is pretty valid कि misconception तकाफुल का नहीं, misconception इंश्योरेंस या अनसर्टेनिटी का है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, अगर किसी और के साथ भी हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है. सो नाउ दिस लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू दिस इज जो वेस्ट है. आप भी ट्रैवल करते हैं दुनिया में, मैंने भी देखा है इंश्योरेंस का जो अडॉप्शन है, जो अपटेक है, वहाँ पे इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स डेली रूटीन, या एक ऐसे एक स्पेंडिंग हैबिट है, या एक पैटर्न है कि एक बिहेवियर है कि जिसको वो फॉलो करते हैं. एंड एवरी ईयर उनको पता है कि उन्होंने घर की इंश्योरेंस करानी है, गाड़ी की करानी है, ट्रैवल करना है तो ट्रैवल से पहले इंश्योरेंस करानी है. एंड दे बजट दे प्लान दीज थिंग्स कि अगर 100 रुपये खर्च करने तो उसमें 110 रुपये का वो प्लानिंग करेंगे कि 10 रुपये इंश्योरेंस के होंगे. And that's how they would actually budget themselves and plan it. How did that happen there? What can be done, or what is Pak Qatar Takaful doing? So enlighten me. You've been in this industry for so long. Tell us what you've been doing, or anything creative that can be done or has been done, or what the West has done, and we unfortunately are not seeing that. Acha, very valid. West has definitely done a better job than us. Most countries in Europe have insurance penetrations of humongous amounts, even compared to places like the US and Canada. अच्छा, एक चीज इस पे याद रखनी होगी कि ये जो कई वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर जो स्टेट प्रोवाइडेड इंश्योरेंस है वो इतनी ऑल इनकम्पसिंग है कि ज्यादातर लोग उसी में प्रोटेक्ट हो जाते हैं, एटलीस्ट जो उनकी बेसिक्स है, कि लाइफ हो गई, सोशल सिक्योरिटी हो गया, थिंग्स लाइक दैट, हेल्थ केयर हो गया. अच्छा, इससे जो हटके है, यू डिस्क्राइब्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट, कि वो जब एक बजट बनाते हैं, वेदर वो एक ट्रिप का बजट हो या एक बिजनेस का बजट हो, उसमें वो इंश्योरेंस को डालते ही डालते. मीनिंग उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया कि भाई मैं अगर ये बिजनेस सेटअप करूंगा तो उसमें ये इंश्योरेंस तो मुझे करानी. अच्छा, हमारे किसी भी सेठ के बिजनेस के बजट में वो इंश्योरेंस का एलिमेंट नहीं होगा.
वही बात है कि हम मिसहैप के बारे में तो सोचते ही नहीं है, मेरे साथ तो कुछ होना ही नहीं है। जैसे क्योंकि बीइंग इन द लाइफ इंडस्ट्री आई हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि पाकिस्तानी मरते नहीं है। हम डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे लेकिन हम मरेंगे नहीं। इसी वजह से हमें उस चीज की फिक्र भी नहीं है, ठीक है ना। हम वसीयतनामा तैयार करने की तकलीफ लेंगे, ना हम हेल्थ इंश्योरेंस या फैमिली तकाफुल लेने की तकलीफ लेंगे, बिकॉज वी डोंट फियर इट। हालांकि हर हफ्ते हो सकता है हम कब्रिस्तान जा रहे हो एक जनाजे के लिए, लेकिन हमें ये नहीं होने वाला है, वो किसी और को होगा। अब हाउ डू यू फिक्स दिस प्रॉब्लम? अच्छा, मैं कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक वालिद साहब जो है वो अपने बेटे को हर महीने या हर हफ्ते कुछ एक पॉकेट मनी देते थे। तो अच्छा, उनको पता था कि ये बेटा जो है उसको कुछ किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना है, एंड उस चीज के लिए वो पैसे जमा कर रहा है। तो he was constantly asking his father. Eventually उन्होंने मजीद कुछ एक्स्ट्रा दे दिया कि चलो ठीक है। अच्छा, जब बच्चे ने अपना पूरा पैसा निकाला और उनके सामने रख दिया, तो फादर ने देखा तो यार इनके पास तो वो पूरे पैसे थे, व्हाई वाज ही कॉन्स्टेंटली पेस्टरिंग मी फॉर मोर मनी। तो जब बेटे ने वो पैसे गिने कि भाई इतने पैसे वो खाने की चीज के हैं और इतने पैसे वो टिप के हैं, ये जो प्लानिंग है, have you ever heard anybody, I mean I can speak for myself, amongst my friends, my family, I have never heard anybody think कि मैं इतने पैसे ले जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में, मुझे ये खाना है और मुझे ये टिप देनी होगी। टिप तो उस वक्त देखेंगे, होंगे तो होंगे, कुछ खुला आएगा तो दे देंगे, नहीं देंगे। सही बात। ये इंश्योरेंस का भी यही अनफॉर्चुनेटली हमारे जहन में एक वो बैठा हुआ है कि यार अगर चलो ठीक है देखा जाएगा, जरूरी होगी तो मरीन के लिए करवा लेंगे, गाड़ी में यार वो टुल्ला बेकार में पूछता रहता है, चलो उसके लिए गाड़ी का करवा लेते हैं। बट कोई फोकस्ड, कोई प्लान्ड, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन के नहीं यार ये मुझे इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, वो नहीं नजर आ रहा। अच्छा, अब मैंने जो आपको उस बच्चे की मिसाल दी, उस बच्चे की या तरबियत ऐसी हुई थी या उसको एजुकेशन ऐसा मिला था कि वो पहले से ही उस अंदाज से सोच रहा है। हमें उसी तरीके से, उसी एंगल से लिटरेसी अपने बच्चों को सिखानी होगी। वी आर नॉट डूइंग दैट राइट नाउ। हमारी स्कूल्स आर सो बिजी वरिंग कि भाई बच्चे का ग्रेड क्या आएगा, कि वो ओ लेवल में कितने एज लाएगा, कि वो ये तो सिखाने बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि बच्चा जिंदगी में करेगा क्या और जिंदगी गुजारेगा कैसे। तो वो जो या तरबियत का एंगल है, जिसमें मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लिटरेसी उसी तरबियत के एंगल में आती है कि भाई सदका देना है, ज़कात देना है, उस वेटर को टिप देना है, इंश्योरेंस की प्लानिंग करनी है कि कल अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है तो आप अपने पास ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हो कि यू आर एबल टू सस्टेन दैट हादसा। वी डोंट डू इट। अब सवाल आया कि पाक कतर क्या कर रहा है। देखिए, सच्ची बात है, जब भी कोई इंश्योरेंस या तकाफुल इंडस्ट्री का इवेंट होता है तो हर आदमी खड़े होकर ये कहता है कि यार हमें अवेयरनेस पे काम करना है, और टू बी ऑनेस्ट वी आर नॉट डूइंग एज मच एज वी शुड बी डूइंग। It could be budgetary constraints, it could be focusing on survival, it could be a lot of other things. बट सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक डिजायर होना चाहिए कि भाई हमें इस चीज पे काम करना है। मुझे सिर्फ कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन में जाके उन लोगों को कन्विंस नहीं करना है, मुझे उस स्कूल में जाके उनके बच्चों को भी कन्विंस करना है कि भाई आप जब बड़े होंगे तो आपको इस चीज पे काम करना है। एंड ऑल्दो दिस will probably come up later, but we can bring it up right now. हमारा जो regulator है, in the case of insurance and takaful, it's the SZABIST. But for example, in the case of banking, it's the State Bank. And the State Bank, at least Islamic Banking Division, has already started working on these things कि लोगों को एक awareness हो कि Islamic banking है क्या और how does it function. The SZABIST needs to do something similar, not necessarily just for takaful, but just for protection. Just to teach people, whether it's children, whether it's university students, whether it's employees of corporations, why is protection important? इस वक्त we have, और क्योंकि अब ये जब COVID-19 और ये सारा कुछ हो रहा है, lockdowns, we have so many people who are borderline poverty level.
one small incident, one Allah na kare, someone ends up in the hospital, they will tip right over and fall below poverty. What are we doing about that? They have no protection because they never realized they needed to get protection. Government is not providing protection to them either, unfortunately. So where do we stand? And the more people that fall below poverty as an economy, that's another thing that हमारे माशरे में जो हम क्योंकि तकाफुल में आप भाईचारी और इन सारी चीजों पे देख रहे होते अगर बहुत ज्यादा लोग पॉवर्टी में आ जाएंगे तो जो हमारे प्रोडक्टिव एलिमेंट्स है सोसाइटी के वो मजीद कम होते जाएंगे because that person who's now in poverty is not going to be thinking about being productive. He's just thinking about survival and desperation. तो हमें इस चीज को रियलाइज करना होगा and again at a regulator level, at a government level, of teaching our children, teaching our youngsters, teaching our adults that protection is an inherent part of life. जब आप अगर जिंदे हैं तो आपके साथ रिस्क है, अगर रिस्क है तो उस रिस्क को आपको मिटिगेट करना है किसी तरीके से. अब आप वो लाइफ की पॉलिसी ले रहे हैं, आप फैमिली तकाफुल ले रहे हैं, आप हेल्थ की कवरेज ले रहे हैं, आप गाड़ी की कवरेज ले रहे हैं, आप घर की कवरेज ले रहे हैं. आई रिमेम्बर एक तकरीबन साल पहले कुछ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में कराची में आग लग गई थी एंड nobody had any coverage. Why? Because they didn't feel they needed it. And if you ask them, अभी अगर आप पूछोगे, जाहिर सी बात है, hindsight is always 2020, उस वक्त तो कहेंगे हाँ यार ले लेते तो शायद अच्छा होता. बट वो तो प्लानिंग, तो वही स्पेयर टायर वाली बात ना, पहले से होगा तो वो किसी काम आएगा, आपके बाद में आप लेने आओगे तो फिर तो वो किसी काम का नहीं है. So that's the thing that we as a society need to realize, that हमें सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट्स और वो जो मेरी इमीडिएट टारगेट मार्केट है वो मेरी टारगेट मार्केट नहीं है. मुझे अगर 50 साल 100 साल आगे का देखना है तो मुझे फिर उन बच्चों को टैप करना होगा जो कि इस वक्त बच्चे हैं, और उस वक्त फिर जब वो बड़े होंगे तो उनके जहन में ये आएगा कि अच्छा मैं अगर ये दुबई की ट्रिप कर रहा हूं तो आई नीड टू मेक श्योर आई गेट माय ट्रैवल कवरेज फर्स्ट. That arrangement, that thinking, that perception of protection, we need to develop. It's not there right now. And like I said, Pak Qatar is working on it, and I'm sure other companies are also working on it. But I think it requires some level of synergy. And obviously, अगर regulator involved होगा तो कुछ हद तक वो synergy भी इंशाल्लाह बढ़ेगी. But so far, we've got a long way to go. No, definitely we have a long way to go, and just to share my thought on this, हम लोग ने भी जब अपना platform start किया, and the purpose was of Smart Choice was to make it easier for consumers, because one of the things that we realized was the distribution of insurance, the accessibility of insurance was very limited to an offline segment or through agents or through branches and all that. And since we are a nation of 200 million population, the it's जो उसकी reach है हमारी जो insurance companies की है, वो again it's not up to that offline segment cannot reach that market size very quickly or available at all times. So digital platform like Smart Choice was established, and according to that, and one of the things that we realized, because we did a survey as well, and one of the things that we saw was 70% of our customers who bought policy through us are first-time insurance buyers. They have never bought an insurance policy before. Wow. And when we asked them, why did you buy a policy? Like, what was the reason? And one of the things that they said was, it's because we found it too easy, because we found it very clear. We were not, कोई घुमा नहीं रहा था, कोई हमें कोई हमें उल्टी उल्टी बातें नहीं कर रहा था, या हमें कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा था. We were just making it very clear, because obviously as a digital platform, और हमारा जो मकसद है वो ट्रांसपेरेंसी है. So हमने सब कुछ सामने रखा हुआ है, सब कुछ दिखाया हुआ है. Even though we are not a Sharia compliant company as such, but we understand our ethical and moral values. So और हमारा जो मकसद है बिजनेस का वही ट्रांसपेरेंसी है. So हमने जब इतना क्लियर किया तो कस्टमर्स ने बोला हाँ यार ठीक है यार, इसमें वैल्यू है या इसमें वैल्यू नहीं है, मेरी काम की है कि मेरे काम की नहीं है. अब आते अभी बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं या हमें फीडबैक देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशली, कि ओपीडी की कवरेज नहीं है, ओपीडी जो है वो आप नहीं दे रहे तो मैं इंश्योरेंस नहीं करा रहा. जबकि एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम दैट यू शुड बी लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, दैट खुदा ना खास्ता हॉस्पिटलाइज होगा तो क्या होगा,
ये तो 1,500 ₹2,000 का बिल है ओपीडी का, आप तो साल में कितनी दफ़ा चले जाएंगे, 4 दफ़ा 5 दफ़ा, खुदा न खास्ता एक दफ़ा भी हॉस्पिटल का बिल आ गया या खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो लाखों रुपए का खर्चा है ये तो। किसी भी डिसेंट हॉस्पिटल में आप किसी भी शहर में सही चले बात जाए, है। and at that time when you are in that position, you don't think about money, you just think about cure, you just want to get कि जिसको भी दाखिल हुआ है उसको वो बस सेहतियाब हो जाए, वो अपने सही पाँव पे बात है। खड़ा हो जाए वापस। So you spend money like crazy, like you spend money like water, whatever it takes. हम्म, Again, I think you are right. It's a very collective effort that is needed on multiple side, because मेरा एक सवाल था वैसे रेगुलेटर के हवाले से, लेकिन आपने उसका उसका जवाब दे ही दिया है। मेरे हिसाब से I think one of the things that can be done, this is again a suggestion. This session is not about me, it's about asking you. But since we are having a candid conversation, and I always wanted to say this, was I think एक pool बनना चाहिए funds का, and I think I've already said this to you in a private conversation before, but जिसमें तमाम insurance company should put some amount of money based on their market share or whatever. There could be a formula out of it, and that could be a marketing budget to really do an awareness campaign around, and not just do it like once a year. It's like it has to be done throughout the year, and it has to be very creative, and it cannot be just done through billboard or Facebook हम्म, pages or whatever. It has to be very true। creative, it has to be on the grassroots level. So yeah, this is anything. If you want to add on this thing, I'm happy to take your comment, but Well, you already said it. I agree. हम साथ मिलके ही करेंगे तो ही कुछ सस्टेनेबल और मटेरियल रिजल्ट आएगा जो कि वाकई पूरे हमारे माशरे का भला होगा, जिसमें unfortunately getting that kind of for lack of a better phrase, cooperation or yeah, synergy is challenging, and I think it's challenging in every industry. But I found कि financial sector में कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है. Maybe because we're all fighting over the same piece of the pie. But we need to realize that we're not doing this for ourselves. We're doing this for our society. ये माशरे की एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है जो माशरे को के लोगों को खुद नहीं पता कि ये नीड इनकी है. हमें वो उनको उजागर करना है, उनको उठाना है अपनी नींद में से कि भाई देखो तो सही क्या हो रहा है इधर, फ्यूचर में कैसे गुजारा होगा, कैसे आगे बढ़ोगे. With COVID-19, the idea of work, the idea of normal has so changed now. I'm sure. In fact, my mother was telling me, she was talking to my sister in the US as well as in the UK. They're all expecting कि जैसे ये वहाँ के lockdowns कम होना शुरू होंगे and people will go to work, there will be tons of people that will be laid off. And not just because कि जी वो business down है, कब up होगा, but also because the whole mindset on what work is has changed. So similarly, हमारे जो हम जिस एक चीज से आदी है उसी चीज से चल रहे, but things need to change. We need to make our population realize that you need to plan. और mishaps होते हैं, चीजें ऊपर नीचे होती है. उसके लिए आपको जितनी भी आप कर सके प्लानिंग करनी चाहिए. तो ये रियलाइजेशन इंडस्ट्री को, रेगुलेटर को, गवर्नमेंट को, we all need to take up this challenge and we need to do something about it. देखिए, the beauty of being a Muslim is that अल्लाह हमसे रिजल्ट नहीं पूछ रहा, अल्लाह हमसे एफर्ट देख रहा है. तो हम true. एफर्ट तो लगाए, हमने तो एफर्ट नहीं लगाया, फिर कहते हैं यार रिजल्ट नहीं आते. तो एटलीस्ट एफर्ट तो शुरू करें. इंशाल्लाह एफर्ट शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे. तो yeah, so I agree with you 100% on that. Okay, I have there's a suggestion from Benjamin, and it is regarding why can't insurance can be mandatory chapter in educational books. Any thoughts on that? Well, I agree. I think not just insurance. I think financial literacy Yeah, needs to be made a part of our curriculums, whether it's at a secondary level, whether it's at a university level. इस वक्त कहीं पे भी नहीं है. अक्सर मुझे याद है मैं जब अपना बैचलर्स कर रहा था यूएस में,
तो हर सेमेस्टर के शुरू में जो यूनिवर्सिटी सेंटर होता था जहाँ सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी काम के लिए आते ही थे, तो वहाँ लाइन से सारे बैंक्स के टेबल लगे हुए होते थे और वो लिटरली फ्री में क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कर रहे होते थे और स्टूडेंट्स पागलों की तरह ले रहे होते थे और साल नहीं गुजरता था और इतना कर्जा उनके सर पे चढ़ जाता था कि वो सर पकड़ के बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं था कि करना क्या है इससे। ये एक टूल है, एक खिलौना नहीं है। तो हमें ये लोगों को सिखाना होगा। तो it should be a part of the curriculum. Unfortunately, Takaful companies, insurance companies don't make curriculums. But yes, that's something that we, all of us, mashallah, we live in a democracy. And we should get this to our people in government that effective education and literacy of financial tools should be a requirement for everybody. So इंशाल्लाह हम आप भी काम करें, हम भी करते हैं, but point आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अब कब होगा मेहनत पे, let's see इंशाल्लाह। Okay. As Pak Qatar has been there for quite a long time, और आप लोगों ने different products भी निकाले हैं. You have two companies. One is Pak Qatar Takaful, General Takaful, I believe, and other is Family Pak Takaful. Qatar General Takaful and Pak Qatar Family Takaful. So, and you're the CEO of Family Takaful. General Takaful generally deals in car insurance, travel insurance, I believe, and other property insurance and other commercial lines, assets insurance. And you are into life insurance. So what kind of innovative products has Pak Qatar Family Takaful has offered or has started to offer या क्या pipeline में है? Because as consumers are obviously उनकी demands भी change हो रही है, even though the penetration is still low, but there is still at least there's a lot of customers out there who are, and obviously you have to attract the millennials as well, the upcoming जो workforce है, जो कि या तो entrepreneurials होंगे या फिर जो freelancers होंगे, जो कि इस वक्त workforce में enter हो रहे हैं, family start करेंगे. What kind of innovative products are your company is coming up with, and what's in pipeline? So please help us out, share us. Acha, first let me add here that one thing that Pak Qatar did, or Pak Qatar Family Takaful was the first life Takaful company in the Pakistani market. General की तो दो companies आ चुकी थी, Pak Takaful and Takaful Pakistan, but life की सबसे पहली जो थी वो Pak Qatar Family थी. अच्छा, इसमें हमारा फोकस ये था डे वन से कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स लाने हैं जो कि ना सिर्फ competitive हो, appropriately priced हो, need based हो, और on top of all of that Sharia compliant हो. ठीक है? So हमारा फोकस ये नहीं था कि Sharia compliant होगा फिर नीचे कुछ भी हो आप ले ले because you want Sharia compliant. Rather हमारे products competitive है in all manner and they are Sharia compliant. So point being that we want to reach out to the needs of the consumer and not just play with your beliefs that look, we're Sharia compliant, so come take the Sharia compliant product. That's not the case. The product has to be competitive, it has to be appropriately priced, and it has to be appropriately serviced. And on top of all of that, it will be Sharia compliant, right? So this is how we have been doing it from day one. And iski wajah se we've had benefits in our products that were generally not done in the market. So for example, both our main banker offering as well as jo hamari individual life ki offering hai, from day one, we've never had a surrender charge. Recently, we launched one product where we put in a surrender charge. Will be to recover the costs that were being incurred for that product. But by and large, for most of our product, we never had a surrender charge. ये जो हमारे investment and savings वाले products है उसके investment and protection वाले products है. So that was something we did because we realized कि यार हम unnecessarily customer को bind करके रख लेते हैं कि भाई आप नहीं जाएंगे. तो हमने कहा कि ठीक है यार आप surrender charges हमें नहीं डालने because that's not what is proving of any benefit to us and of any benefit to the customer. So we removed it. So that was one thing that we focused on from day one, is trying to make products that are need-based, that actually address the requirement of the customer.
अच्छा, जहां तक दूसरी लाइन है हेल्थ का प्रोडक्ट, ऐसे आपको पता है वी रिसेंटली लॉन्च्ड इट. Health, unfortunately, in our society is a very challenging product, given the high claim ratios that come in and the high medical inflation that's there. So usme we know it's a need, we know it's a requirement of the market, we know it's a social need as well, and so we've launched it, but we've tried to be a little conservative in doing it. Our future plan is, inshallah, once we see that this is working out well, we would like, and this is sort of in the research phase, to look at going towards micro health products that we can take out into rural areas for farmers and so on and things like that. तो उसका उस पे सोच चल रही है, उस पे डिस्कशंस चल रही है. इसके साथ साथ जो सच्ची बात है, ज्यादातर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनका जो ब्रेड एंड बटर होता है वो यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स पे से होता है. अब यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स, many of them are being sold through banks, as we all know. Banca is one of Pakistan's most successful insurance channels. But यूनिट लिंक प्रोडक्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर कंज्यूमर की मैच्योरिटी अब बढ़ रही है, कंज्यूमर की नॉलेज भी बढ़ रही है. कंज्यूमर इज नाउ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. कंज्यूमर इज नाउ looking critically at the agent, looking critically at the banker who may be offering the product to him, which is good. यानी देखें, जब तक के हमारा कंज्यूमर खुद सवाल नहीं पूछेगा, मैं लाख कॉल बैक कर लूं, मैं लाख डिस्क्लेमर्स ले लूं, मैं सब कुछ कर लूं, it won't help. And in fact, this is again another issue that plagues our whole society. We don't read. हमारे पास कोई अकाउंट खोलने के लिए हमारे पास आता है and we say हाँ ठीक है अकाउंट खोलना है. How many of us have and we're in the financial sector, how many of us have read the terms and conditions? How many of us have read the application? I mean, it's usually sign here, sign here, sign here, and sign here, and we sign it. We haven't read it. Chalo, we're in the sector, ladna pada, lad bhi lenge. But the average consumer out there who doesn't have that financial muscle, unfortunately, for lack of a better phrase, falls into a deep hole when they realize कि यार ये मैंने क्या कर लिया है. तो हमें अब क्योंकि वो कंज्यूमर की माशाल्लाह मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, वो कंज्यूमर के नॉलेज भी बढ़ रही है, that consumer now knows what they want to ask, what they want to know. So we now need to make products that meet that higher level of maturity. Whether that's, as you rightly said, products being sold digitally, because वहां पर assumption ये कि बंदे ने खुद सब कुछ पढ़ लिया, ट्रांसपेरेंसी है, देख लिया, समझ लिया और फिर आगे बढ़ रहा है. Unlike with an agent or with a banker where he may be just forced to sign because the banker is very pretty or the agent is his cousin's friend or whatever the reason may be, right? So we want to now develop products where we are looking at the benefit of the consumer, because now the consumer is beginning to say, no, I will not accept this product. I want a product like this. So obviously we are again revisiting our products. And this is a constant exercise. It's not something that aaj main baat kar raha hu, kal ye ho jayega and we're done and chutti and let's move on. Those days are gone when I can say, okay, you will build it and they will come. I will need to constantly be reinventing my wheel to be able to make that wheel adaptable to someone else's new car. It works now, maybe it will not work 2 years down the line. So having said that, we are constantly revisiting our products. We have feedback coming in from the ground. We have feedback coming in from our investment team, from our operations team, from our claims teams. सारों के feedback आते हैं, फिर इस पे discussion होती है कि how can we make a better product? How can we make something that is easy to sell and at the same time easy to understand and at the same time provides the benefit that the customer is looking for. So it's a sort of a reiterative process that keeps taking place again and again. Yes, fair enough. But I think you since you mentioned about health insurance in your conversation and your launch, you have launched a product, I believe, about a few months back. Yes, and you have, what I have looked at,
the product and compared it to other products, because that's what we do all day long. So I think you've come up with something very different as compared to others, where you've actually covered pre-existing conditions from day one, as long as it is disclosed, and you're being careful whether to underwrite a policy or not, and you're not just blindly allowing everyone to buy a policy. You want to make sure that whoever you're giving a coverage, you know what you are getting into, right? Yeah. And you're doing a proper risk management, as they say, right? Even because, even though usually in retail products, it's usually you do not see risk per person. You actually try to build a product which is for the masses, and you build a pool, and that's how you do the insurance or the takaful side of things. So since you're doing this, what was the thought process? Was there any insight that made you get into this, build a product like that, different from others? Obviously it's priced differently as well. ऐसा नहीं कि pricing सब जैसी है, different pricing है, coverage different है. So what's the thought process that's going on, and what's the response like? Yeah. Alhamdulillah, the response has been pretty good actually, and we haven't started selling it through our digital channels yet. It's only being sold through our agents at the moment. But Alhamdulillah, we are surpassing our targets where this product is concerned. आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जो इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. हमारी जो इस पे थॉट प्रोसेस थी वो ये थी कि बाय एंड लार्ज जितने प्रोडक्ट्स इस नौयत के आए हैं मार्केट में, they have not been very successful. Now it could be they were so generous in their offering and they were so badly hit with the claims, it just had to fizzle away. Sorry, we can't sustain this. Alternately, they were so strict in their offering that nobody came to them at all, and then it just fizzled away. So we realized that we need to find a middle approach. It would be great to be completely generous, because that would bring in the crowds left, right, and center. But that would so deplete my pool that I will not be providing a sustainable product into the future. On the other hand, if I'm so strict, I won't do anything, then obviously, if I was the consumer, I wouldn't go to them either. I'm like, what's the benefit? Why should I come to you? That's why we tried to find a middle way. Yes, we're taking a risk. Even now, we had internal elements within the company telling us this is not the right thing to do. But Alhamdulillah, overall, we had a understanding, a sense of direction था सबका कि भाई हमें इस पे at least एक try करना है. At least एक ऐसी चीज बनाएं कि लोगों को interest भी लगे और हमारी risk इतनी ज़्यादा, हमारी जो risk management इतनी ज़्यादा challenge ना हो जाए कि हमारा ये product बिल्कुल ही fail हो जाए. तो इसीलिए फिर हमने, for example, आपने rightly कहा, हम day one से pre-existing conditions accept करते हैं, but only up to a certain percentage. तो वो उसका मकसद ही ये है कि we want you to come and we will increase that percentage every year till after, I believe, 3 years or 4 years, it will be 100%. In fact, less than that. तो मकसद यही है कि हम रिस्क को भी मैनेज कर ले और कस्टमर को भी एक ऐसी चीज दे जो उसके लिए कुछ वाकई बेनिफिट दे रही हो. It's not just a product for the sake of a product. It's a product that actually yields a benefit कि अगले साल भी जब मैं उनके पास जाऊंगा कि भाई अब आप दोबारा इसको रिन्यू कर ले इस कवरेज को, तो कहेगा 100 बिस्मिल्लाह आप ले ले, I'm on board. So ये हमारा मकसद मेन यही था. और हमारी रिसर्च यही दिखा रही थी कि between the two extremes of completely open and completely closed, we wanted to work in the middle where we could protect our risks and at the same time also offer a product to the consumer जो कि उसके लिए वाकई कुछ benefit दे रहा हो और वो उसको ये ना feel हो after a year कि यार why am I wasting my money. So it should have some level of excitement or purpose कि भाई हाँ ठीक है ये मैं रख रहा हूँ अपने पास, मुझे भी फायदा है, मेरे बीवी बच्चों को भी फायदा है. So from that angle, so that's where, and yes, we had done our research, we had studied the market, and this is what we found. Great. So we're getting a lot of questions, Azeem Saab, and I'll try to ask a few as we go along.
So we've got a question from Khurram Zaid. He's asking, a post-COVID-19, do you think awareness of insurance takaful will increase due to this crisis? Because this is an uncertain situation, first unprecedented in our lives. I think it happened back in 1930s. When the World War II was happening, there was a pandemic at that time. So, do you think this will, raise some awareness? Yeah, insurance companies can jump on this opportunity. How is Pak Qatar Takaful, family Takaful seeing this? How are you seeing this? I'll share a small story with you. When I was joining Pak Qatar in 2007, तो अम्मी से किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रही थी या बात हो रही थी, एंड क्योंकि आई जॉइंड इन February 2007 और दिसंबर में बेनजीर भुट्टो का जो सारा assassination हुआ था and everything that happened after that. So this discussion with my mother was taking place after that Benazir incident, and obviously when she saw all the cars being destroyed and buildings going up in flames, so she was like, your line of business would obviously have a lot to do in a society like this. So I told her, Kash, and I always quote this story because individuals tend to have very weak memories. Right now, मैं किसी के पास अगर health का product ले जाऊंगा, तो he'll probably good proportion chance कि he'll say, give it to me right now. Maybe after 6 months, once this COVID has started to taper away, maybe they will still remember it. A higher percentage may come along. अच्छा होगा ये कि मैं जब 3 साल के बाद जाऊंगा, तब तक लोग भूल चुके होंगे, या 4 साल के बाद जाऊंगा तब तक लोग भूल चुके होंगे. इसलिए जो हमारा जो पिछला एक सवाल था कि लोग अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जब तक एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, एज अ रेगुलेटर हम इस चीज को आगे लेके ना चले कि हमें लोगों को सिखाना होगा कि ये चीज जरूरी कितनी है. ये इमीडिएट तो एक बूस्ट मिलेगा, कुछ साल बाद हम भूल जाएंगे, जैसे हम हमेशा भूल जाते हैं और हम वहीं के वहीं दोबारा आ जाते हैं. तो अभी भी कई लोग हैं आपको रोड पे मिलेंगे, गाड़ी आपकी कवर्ड है, हाँ यार वो सिविक सेंटर के बाद वो बंदा खड़ा हुआ था, 100 रुपए लिया था, उसने कर दिया था. तो वो व्हाट एग्जैक्टली आर यू गेटिंग, दे डोंट नो. कई सर्विस मिलेगी, दे डोंट नो, दे डोंट रियली केयर. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी विल फॉरगेट, अनफॉर्चुनेटली. तो हम अनफॉर्चुनेटली लोग भूल जाएंगे, इमीडिएटली नहीं भूलेंगे, कुछ अरसे बाद भूलेंगे. एक इमीडिएट तो एक डेफिनेटली एक बूस्ट आएगा. अब सवाल ये है कि क्या हम एक माशरे के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे, क्या इस चीज को अपना एक विजन का एक हिस्सा बना ले कि भाई हमें अपने अगले जनरेशन को, जैसे हम ये डैम्स के लिए बात कर रहे थे कि भाई अगर हम डैम नहीं बनाएंगे तो हमारा अगला जनरेशन पानी के लिए तरस जाएगा. तो मे बी वी नीड टू टीच देम फाइनेंशियल लिटरेसी इन अ सिमिलर मैनर, दैट इफ यू डोंट स्टार्ट वरीइंग अबाउट दिस, we as a society will never be able to strengthen ourselves. क्योंकि हमेशा कुछ लोग होंगे जो कि हर एक हादसे पे ही वो फाइनेंशियली इतना डिप्राइव हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि वो माशरे की प्रोडक्टिव लेवल से हट जाएंगे. हमें we need to make sure कि everybody has some cushion of protection. So whether it's a government sponsored plan for health coverage, alhamdulillah, whether it's individually done, ऑब्वियसली जितना बड़ा पूल होगा उतना कॉस्ट इफेक्टिव चीजें होगी. अब वो वी आर ऑलवेज इन अ कैच 22. लोग आते नहीं है तो पूल बनता नहीं है, पूल बनता नहीं है तो लोग आते नहीं है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनती है. तो अगेन ये जब तक माशरा पूरा और मुल्क एक जज्बे के तौर पे इस चीज को आगे नहीं लेके चलेगा, we will after a little while will forget again anyway, unfortunately. That is my perception based on history and the 45 years that I've been alive. Fair enough. Well said. Okay, so we are getting another question. Let me see if I can ask you that. So
Muhammad Farooq is asking, are you planning to offer individual medical product for parents of overseas Pakistanis who are above 65 years old? Uh, That is something we would like to do. ओवरसीज का शायद हम इतना शायद मैनेज ना कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा जितनी भी हेल्थ कवरेजेस है इज प्राइमरली थ्रू आवर पैनल हॉस्पिटल्स, एंड आवर पैनल इज ऑब्वियसली ऑल पाकिस्तान बेस्ड. But above 65 का that's something we have in the cards. As I mentioned earlier, जैसे सत्य ने जब हेल्थ का पूछा था तो कि हमने इनिशियली एक बड़े प्लान तरीके से ये प्रोडक्ट लॉन्च किए, क्योंकि हम इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, हम इसको लॉन्ग टर्म पे सस्टेन करना चाहते हैं. और उस सस्टेनेबिलिटी का मकसद ये है कि हमें कस्टमर को भी वैल्यू देना है और हमें अपना भी रिस्क मैनेजमेंट करनी है. लिहाजा इस वक्त हमें एक एज की लिमिट रखनी पड़ी है जिसमें 65 उस एज से आउट हो जाता है. बट इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और दुआ तो यही है और उम्मीद यही है कि अल्लाह इंशाल्लाह इसमें कामयाबी देगा, तो हम इसको मज़ीद और अट्रैक्टिव करेंगे कंज्यूमर के लिए, क्योंकि तब तक हमारा जो पूल होगा वो इतना स्ट्रेंथन हो चुका होगा कि हमें अगर एज बढ़ानी भी पड़ी तो हम उसको सक्सेसफुली और वायबली और सस्टेनेबली बढ़ा सकेंगे. सही है. आई थिंक सवाल उनका शायद इस तरह से था कि वो शायद खुद पाकिस्तान से बाहर है, उनके पेरेंट्स यहाँ पर है, एंड ही वांट्स टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिज पेरेंट्स. हाँ, तो सेम आंसर इज द सेम कि जब वो एज लिमिट आ जाएगी तो डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली बी अवेलेबल इंशाल्लाह. Yep. Okay. Great. Fair enough. Okay. So, Pak Qatar as is there. पाकिस्तान में और भी बहुत सारी जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज है, तकाफुल कंपनीज है. What's so unique about Pak Qatar Takaful? In terms of what's your unique selling point that you tell people or consumers, or what is your communication to consumers, and what is your value system which you think that allows you to serve better customers, because at the end of the day it's a piece of paper that you are selling, right, or you're giving. It's as we say it, right. It's for consumers. जो लेने आ रहा है, जो कि उस प्रोडक्ट को ले रहा है, वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी से खरीदे, आपसे खरीदे, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ तो वही ले रहा है. क्या फ़र्क है आपके पाक तकाफुल में एज कम्पेयर टू अदर्स? व्हाट इज योर यूएसपी and how do you differentiate yourself? Well, we're not actually selling a piece of paper. We're actually providing trust. The consumer जब वो हमारा प्रोडक्ट ले रहा है, फिर वो हेल्थ का हो या लाइफ का हो या कॉर्पोरेट हो ग्रुप के लिए, वो हमें ट्रस्ट कर रहा है. वो इस चीज़ का यकीन कर रहा है कि अल्लाह ना करे कल कोई मिसहैप होगा, मेरे एम्प्लॉय के साथ कुछ होगा, मेरे साथ कुछ होगा, मेरी गाड़ी के साथ कुछ होगा, तो पाक कतर तकाफुल ग्रुप विल बी देयर टू मिटिगेट माय रिस्क, टू फाइनेंशियली इंडेमनिफाई मी. तो हम उस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. Otherwise, nobody will give their money to you, and nobody will just close their eyes and come to you otherwise. अच्छा, what makes us different? जैसे मैंने शुरू में कहा था, पहले भी एक सवाल इसी किस्म का था कि हमारा फोकस हमेशा ये रहा कि हमारे प्रोडक्ट्स नीड बेस्ड हो, अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड हो, अप्रोप्रिएटली सर्विस्ड हो, और उसके साथ साथ वो शरिया कंप्लायंट. मुझे याद है जिस वक्त हम स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त हमारे एक और डेडिकेटेड कंपेटिटर थे. उनकी जब ऐड आती थी अखबार में तो वो यही होता था कि अगर आपको जहन्नम नहीं जाना है और जन्नत जाना है तो आप ये प्रोडक्ट लेंगे. तो हमने हमेशा इस चीज़ से गुरेज किया कि यार मैं किसी को उसका फेथ दिखा के ब्लैकमेल नहीं करना चाहता. ठीक है, यस, मेरा प्रोडक्ट शरिया कंप्लायंट है, नो डाउट. सिमिलरली जैसे आप झटके का गोश्त नहीं खाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं ज़बीहा या हलाल गोश्त ही खाऊंगा, तो सिमिलरली ठीक है, ये एक हलाल और शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट है. लेकिन ये सिर्फ शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी नीड्स मीट कर रहा है, ये आपकी अप्रोप्रिएट प्राइस किया हुआ है, ये आपको अच्छा सर्विस भी देगा. तो ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं. एंड दैट्स व्हाई वी पुश इट
as a Sharia compliant product. कि we've got all of these benefits and it is Sharia compliant. अच्छा, इसमें सत्यन मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँ. I know we're almost out of time. कि हमारे माशरे में एक और जो एक थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज या ला इल्मी का जो हम शिकार होते हैं अक्सर, वो ये होता है कि जब हम कहते हैं कि एक चीज शरिया कंप्लायंट है तो उसका मतलब होता क्या है. यानी व्हाट मेक्स समथिंग शरिया कंप्लायंट. कैन आई से PIA इज अ शरिया कंप्लायंट एयरलाइन? कैन आई से दैट यूनिलीवर इज अ शरिया कंप्लायंट कंपनी? कैन आई से मीजान बैंक इज अ शरिया कंप्लायंट? or are Mizan Bank's products Sharia compliant? So इसमें भी कुछ हमारे माशरे में कंफ्यूजन्स है कि जब मुझे याद है जिस वक्त पाक कतर स्टार्ट हो रहा था तो हमारे उस वक्त जो फाउंडिंग CEO थे उन्होंने एक साहब के साथ वो बैठे हुए थे. उन्होंने कहा यार अच्छा टैलेंट नहीं मिलता है, बहुत महंगा होता है और शुरू में कैपिटल कंजर्व करना होता है और टैलेंट की भी जरूरत होती, तो हमेशा हम इस कश्मकश में रहते हैं. तो उन्होंने कहा यार तुम तो शरिया कंप्लायंट काम कर रहे हो, यार तुम्हारा टैलेंट तो सस्ता होना चाहिए. तो उन्होंने उससे सवाल पूछा कि यार उनके भी किचन चलते, उनके भी बच्चे स्कूल जाते, उनके भी घर वाले होते, तो वहां पे भी एक कॉस्ट आती है. तो ये उस बंदे का माइंडसेट था कि जब आदमी दीन का काम कर रहा है तो कॉस्ट की क्या बात हुई यार. तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट है. अब मैं जब एक चीज किसी से कहता हूँ कि ये चीज शरिया कंप्लायंट है, लेट्स से ये प्रोडक्ट शरिया कंप्लायंट है, बट फॉर एग्जाम्पल इनफैक्ट UAE में अक्सर ये इशू आता है कि आप किसी इस्लामिक बैंक में जाएंगे और आपको नजर आएगा कि वहां जो खवातीन काम कर रही है वो हिजाब नहीं पहनेंगी, बट उनका प्रोडक्ट शरिया कंप्लायंट है. तो ये लोगों को अक्सर कंफ्यूज कर जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है. तो खैर ये लाइक आई सेड ये काफी तवील डिस्कशन है कि भाई शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट क्या चीज होती है, शरिया कंप्लायंट कंपनी क्या चीज होती है और शरिया कंप्लायंट का मतलब है क्या. I think we should have a separate webinar Definitely do that. on this topic. तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ जो ला इल्मी है या इग्नोरेंस है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, कि वी आर नॉट अवेयर एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. तो लाइक आई सेड पाक कतर का फोकस हमेशा ये रहा कि प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाए कि लोगों को उसकी जरूरत हो, लोगों की प्राइस वाइज वो मीट कर रहा हो और उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा हो और एट द सेम टाइम वो शरिया कंप्लायंट हो. तो जो मैंने कुछ एक दो मिसालें भी दी थी अर्लियर ऑन, सरेंडर चार्जेस हमने नहीं डाले थे बिकॉज वी फेल्ट कि दैट्स अ बेटर प्रोडक्ट फॉर आवर कंज्यूमर्स. सिमिलरली एक दो चार ऐसी और भी चीजें हैं जो हमने डेवलप की थी. हो सकता है कुछ चीजें हो जो हमारे पास बेहतर हो, दूसरों के पास नहीं हो सकता है दूसरों के पास हो हमारे पास नहीं हो, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे हो कि लोगों की नीड्स भी मीट कर रहे हो, उनकी प्राइस रेंज में भी आ रहे हो और उनकी सर्विस नीड्स भी पूरी हो और एट द सेम टाइम उनको एक शरिया कंप्लायंट ऑप्शन मिल रहा हो. Great. We're getting again a lot of questions. So let me, instead of asking what I wanted to ask, let me ask what the audience wants to ask. Sure, I think that's sure. better. So we've got a question from, got a lot of questions. Okay, so let me just, so Hunain Kapadia is asking, has Pak Qatar Takaful ever returned the amount left over from the pool to the recipients in the retail sector if it's not gone towards claim or management fee? Yes, very good question. Like I said, we're sort of running short on time. जो तकाफुल का जो एक USP है वो हमारा सरप्लस शेयरिंग है कि अगर क्लेम्स कम आते हैं तो जो वक्फ पूल में जो पैसा आया है कैन एंड अप गोइंग बैक टू द पार्टिसिपेंट्स जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था. तो अनफॉर्चुनेटली जनरल साइड पे तो गिवन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट इज, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू बी एबल टू डू दैट. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इंडिविजुअल लाइफ के प्रोडक्ट्स है और हमारे बैंका के प्रोडक्ट्स है, आई कैन कंफर्टेबली से since 2008, which was our first full year of operation for life, and 2009, I believe, for Banca, we have been effectively giving a surplus back to our participants every year. तो होता ये है कि क्योंकि वो इंडिविजुअल लाइफ के प्रोडक्ट्स यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं तो जो भी सरप्लस अनाउंस होता है वो हम उनके कैश वैल्यू में ऐड कर देते हैं. वो अगर विड्रॉ करना चाहे और कैश लेना चाहे वो उनकी मर्जी है, बट एटलीस्ट दिस वे उनकी जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है वो फिर थोड़ा बूस्ट मिल जाता है और वो मजीद अपना आगे चलते रहते हैं. तो येस, वी बीन डूइंग दैट एवरी ईयर
since almost 2009. Fair Alhamdulillah. enough. Fair enough. Okay, so we've got another question from Sohail Ilyas Bhatt. What's the difference between 100 Takaful person based or window Takaful services? Like, अच्छा, बेसिकली विंडो तकाफुल जैसे आप जानते ही है, एक कन्वेंशनल कंपनी है जिनका मेजॉरिटी कन्वेंशनल इंश्योरेंस का बिजनेस है. जब से एससीसीपी ने आई बिलीव 2010 के आसपास में या 12 के आसपास में विंडोज के रूल्स फॉर्मुलेट किए हैं, तो अब तो तकरीबन सारी कन्वेंशनल इंश्योरर्स जो है उन्होंने अपना तकाफुल का विंडो शुरू कर लिया है. तो डिफरेंस सिर्फ यही है कि जैसे बैंक्स में होता है, अगर एक कन्वेंशनल बैंक का एक इस्लामिक विंडो चल रहा है तो वो अपना ऑपरेट कर रहा है. जो शेयर्ड सर्विसेज है वो कन्वेंशनल से लेता है क्योंकि दैट्स द लार्जर कंपनी ऑब्वियसली. हो सकता है उसका सेल्स का भी वो बेनिफिट उठा रहे हो, और जो भी इस विंडो की जो प्रॉफिट बनती है वो इवेंचुअली फीड्स बैक इनटू द मेन पेरेंट company, which is the conventional company. This is true of banking and this is also true of insurance. तकाफुल में ये होता है कि हमारे पास तो है ही तकाफुल, वी हैव नो अदर ऑप्शन. यानी मैं अगर किसी कस्टमर के पास जाता हूँ और वो कहता है कि सर मेरे ये दो बिजनेसेस है, एक में मैं फॉर एग्जांपल मेरी ब्रूअरी है जहाँ मैं अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाता हूँ, और ये है जहाँ पर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाता हूँ, तो मैं कहूँगा ठीक है मैं आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की तो कवरेजेस कर सकता हूँ, पर मैं आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस के पोर्शन की कवरेजेस नहीं कर सकता. तो एक कन्वेंशनल कंपनी होगी, वो कहेगी कोई मसला नहीं है, वो आपका मैं कन्वेंशनल दे दूंगी, वहाँ पे मैं तकाफुल दे दूंगी इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज दोनों कन्वेंशनल दे दूंगी इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम. तो हमारा ये है कि ऑब्वियसली हमें जो एंड वी हैव, जब से हम आए हैं पाक कतर तकाफुल ग्रुप, we've always strived to be not just have a takaful Sharia compliant takaful product, but we try to do all our business operations in as Sharia compliant a manner as possible. तो उसमें ये होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी सारे शरिया कंप्लाइंट एरियाज में ही होंगे, हम कन्वेंशनल जगह पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे होते. सो हमारे सारे ऑपरेशंस एक शरिया कंप्लाइंट एक परव्यू के थ्रू, वी हैव अ रेगुलर शरिया ऑडिट एवरी ईयर, अदर देन ऑल द स्टैट्यूटरी ऑडिट्स जो होते हैं वो तो होते ही होते, पर हमारा एक कंपनी वाइड शरिया ऑडिट भी होता है हर साल. तो इस तरीके से हम हमारा हर ऑपरेशन का एस्पेक्ट को शरिया की नज़रों से देखा जाता है. लाइक आई सेड, हमारा फोकस ये है कि हमारे प्रोडक्ट शरिया कंप्लाइंट हो, और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे सारे ऑपरेशंस और फंक्शंस भी शरिया कंप्लाइंट हो, एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर ऑफन रिविजिटिंग. इसीलिए जैसे मैंने कहा हमारे ऑडिट भी हो रहे होते हैं हर साल, जिस पे जहाँ कहीं कोई इश्यूज आते तो हम उसको करेक्ट भी करते हैं. तो फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि जब विंडो चल रहा होता है वहां पर उसको उसके पेरेंट कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट होता है, और उसकी जो प्रॉफिट आती है वो फीड्स इनटू द ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी, और हमारा जो है वो पूरा ही तकाफुल है. लिहाजा देयर इज नो अदर ऑप्शन, जो भी है वो यहीं पर होगा और इसी तरीके से होगा. वी हैव नो two options to play with two different areas. sure. Right. And I think we've got another question. I hope you don't have I think you have another 5-10 minutes you can spare. Yeah, sure. No problem. Okay, yeah, good. no problem. So since we have gone over our time, we were supposed to end it in an hour. I think we are standing at 1 hour 3 minutes now. So a few questions. Another one has come from Oves. Oves is asking, COVID-19 minus 1.5% growth rate and uncertainty. How will you sustain in this? How are you going to sustain in this industry? I think he's trying to say is that how Pak Qatar will sustain this rough patch, and how much impact it will have on your business lines, and how you can respond to that. Yeah, it's a very good question, Oves. यार इसमें तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये तो पूरे माशरे पूरी इंडस्ट्री के लिए है, और ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए है. हम वी जस्ट हैड आवर फैमिली तकाफुल की मैनकॉम यस्टरडे, तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि वी आर लुकिंग एट अ चैलेंजिंग sometime in the future. The near future is looking to be challenging.
But alhamdulillah, we are very grateful to Allah that where we stand right now as the Pak Qatar Takaful group. So alhamdulillah, we have the financial strength to carry us forward. And on top of that, we are very grateful to our shareholders, um, both in terms of the individuals who are there, as well as in terms of the Qatari financial institutions that are there. We also have a German financial institution on board. And alhamdulillah, their confidence in us and their confidence in the Pakistani economy gives us the confidence to say that inshallah, we are here to stay, we're not going anywhere. And inshallah, we are looking forward कि at least जो initial जो एक boom होगा लोगों का कि भाई coverage करानी है, चले हम वो boom तो meet कर ही लेंगे. But inshallah, we will have further unique products and services available that जब ये boom कम भी होगा तो इंशाल्लाह लोगों के लिए यकीनन इंशाल्लाह new innovative products होंगे जो कि उनकी needs meet कर रहे होंगे. So inshallah we'll carry through with this, and alhamdulillah we've not had to take any adverse steps yet, and inshallah we're praying the last 10 nights of Ramzan that Allah allows us to sustain this, and we managed to come out of this rough patch unscathed, inshallah. Inshallah. Right. So another question from Babar Ali Siddiqui. So how are digital platforms helping the Takaful industry reach its targets? I think Azeem Saab is asking about our performance from you. Your performance from us. Okay. But I think the whole industry, how digital platforms are going to help this Takaful industry. I think it's not just Takaful, I think it's the entire insurance industry we should be talking about. Yeah, and देखिए जैसे आपने rightly कहा था कि some of the customers that you've seen on your digital platform thus far have been first-time buyers of insurance. So just that alone gives us hope that alhamdulillah, we are now reaching a segment which was not part of the pie to begin with. So we are not just shifting the numbers around, we're actually increasing the size of the pie overall. So that is very heartening to hear. That's very good to hear. और इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं हम कि एक तो इस किस्म के भी लोग होंगे, फिर उस किस्म के भी लोग हो जो कि जिनको आसानी से एजेंट का या ब्रांच का एक्सेस ना हो, whether it's rural areas or far flung areas. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत अच्छा है. We're one of the best in the region. I mean, we're definitely better than a lot of the developed world. So if that be the case, inshallah, if people have easy access to easy to understand products, need-based products, need-based pricing, so there's no reason why they would not avail them. So उम्मीद तो अच्छी है कि इंशाल्लाह ये digital channels हम सबके लिए beneficial होंगे, पूरी industry के लिए beneficial होंगे. But at the moment, ये कहना कि क्या have you met all your targets from here? I think maybe it's a little premature to comment on that front. But definitely, yes, it's something that we are looking forward to being one of our more successful channels, inshallah. No, I just add on this thing because that's what we do at day in day out, and we try to understand customer behavior, where they're coming from, why they're buying online, why they're even searching online. So I think as digital platforms is playing a huge role. In two ways. One is the type of customer who does these e-commerce transactions, जो कि online आता है, खरीदता है, he understands payments, he has some kind of trust as well in digital brands, and he goes ahead and does the entire transaction online. So that is one aspect of platforms like us who do that, who allow that for such customers to avail these products of insurance or be it takaful. Because expats की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में बहुत बड़ी expats की audience है जो कि different products खरीदती है या different जो है वो insurance के products हमारे platform से खरीद रही होती है.
in the case of travel insurance, in the case of health insurance, even in motor insurance. So people sitting outside Pakistan, they have families over here, और वो बैठ के हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है. So this is a new segment altogether जो कि ब्रांच या एजेंट मतलब दूर दूर तक इसको रीच भी नहीं कर सकता था. और उसकी उसकी ज़बान भी नहीं समझ सकता था, उसके टाइमिंग को मैच नहीं कर सकता था, उसके कम्युनिकेशन मोड को नहीं मैच कर सकता था. And we figured that out. So that is one advantage of digital. The other is that it has an advantage of offline and online. So online people do research and offline they buy. So because we've seen this, is that our platform has actually helped insurance companies get customers who've seen everything online and then gone offline to buy the product from an agent or from directly from an insurance company. So it has a multitude of exponential reach and impact, but it's just that obviously it's not that big enough that you can say it has an impact, because again the issue is not with a platform like us, but the issue is with the penetration of insurance and Takaful in itself, and the awareness of financial literacy, where the challenge is. And so it's a much bigger problem. कि क्या digital solve कर देगा? Digital itself will not solve this. I think it has a lot of other aspects to it, which Azeem Bhai has already covered. One more question I'll take, and we'll end this after that. So Zohaib is asking, let me put that here. So Zohaib is asking, how do you see the future of micro insurance Takaful considering the economic change? Since you talked about micro insurance, that you plan to get into that segment, and you've seen other players already doing that, insurance companies already doing micro insurance and working with telcos and other players. How do you see that the future of that? I'm assuming economic change means the current whole change of paradigm and change of perception and I guess, COVID-19, yeah. etc. Yeah, okay. यार ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे तो माइक्रो इंश्योरेंस सडनली बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट. उनका जो पहले थोड़ा सा भी सस्टेनेबिलिटी थी, सर्वाइवेबिलिटी थी, अफोर्डेबिलिटी थी हेल्थ केयर की, अब तो वो भी ख़त्म हो गई है. So now looking at the lowest common denominator, you're going to need micro products that can cater to that. इसके साथ साथ एक और जो अहम पॉइंट है, क्योंकि as Sipten mentioned in the beginning, I'm also a trustee at a trust where we provide microfinance, Sharia compliant microfinance. तो उसकी भी नीड बढ़ रही है माशरे में, उसमें भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है. अगर इकोनॉमी में जॉब्स नहीं है, लोगों के पास कैपिटल नहीं है, maybe they will obviously start turning to these micro finance providers, whether it's banks or it's NGOs or whatever, और वहाँ से वो अपना फिर छोटा बहुत काम शुरू करके रोजगार गुजारा करेंगे. तो उसमें भी आपकी माइक्रो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट या माइक्रो तकाफुल की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई अब आपने एक फाइनेंसिंग कर ली, एक इन्वेस्टमेंट कर ली, अब आप you need to protect that investment, you need to protect yourself, you need to protect the assets that you have bought. So micro insurance, so without fail, again, in many countries of the world, it's the government that usually does this. Unfortunately, हमारे मुल्क में the government has other bigger problems to worry about, so they're not doing this. So we need to then worry about it. But requirement तो है, requirement तो कब से है. Unfortunately, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का अपना वो पेनिट्रेशन, वो फुटप्रिंट, वो स्ट्रेंथ वो नहीं रही है, और सारी अनफॉर्चुनेटली कंपनीज का फोकस अर्बन एरियाज में ही रहा है. एवरीबडी वांट्स द बिग फिश, हर एजेंट छक्का मारना चाहता है. Nobody wants to go for the small tick 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 टुक टुक करके तो कोई नहीं खेलता, unfortunately. Everybody wants to be a boom boom. So we are now having to rethink that strategy. और क्योंकि इन इकोनॉमिक हालात में जब ज़्यादा लोग अब मज़ीद पॉवर्टी लेवल के नीचे जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, so we need to be sure that we have ideally products available for them that can help them in their times of need, and not just products that
yield incredible returns, Sure. but rather provide the protection that for which insurance or takaful actually exists. So I hope that answers the Sure. question. Fair enough. No, it does. I think because there are a lot of communities out there who have, like the one you mentioned about SR Trust. There are a lot of other societies, communities who have a lot of members. जो कि, they come from they have different backgrounds in terms of financial background when I'm talking. So there could be a huge role where they could play, the ones who have, are capable enough or have wasail hai unke paas financially. They can support the others who are actually does not have the wasail, और उनको प्रोटेक्शन दिला सकते हैं, उनके लिए कवर खरीद सकते हैं, या एक सर्टन पूल बनाया जा सकता है. क्योंकि आज भी तो हम किसी ना किसी तरीके से अपना पूल बना ही रहे होते हैं. एवरीवन इज मेकिंग अ पूल. उसको हम जो है ना वो कमेटी कह दे या कोई और तरीका कह दे उसको. एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक एन इमरजेंसी फंड. एंड तो बहुत ज़्यादा इस पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट अगर ये चीज़ें से करें, तो जिनके पास अवेयरनेस है और जिनके पास नहीं है, I think this can transfer. This can work as a transfer mechanism of knowledge as well, and understanding that there is a product like this, that whenever you are financially, have enough cash for yourself, then you can buy it for yourself and don't have to rely on someone else to give you this micro insurance product. So I think it's micro insurance is a great thing. It is really needed. And abhi bhi questions are rahe, but I think we'll have to call this a day. The last thing which Abdullah is asking, which is about, is Smart Choice doing anything about awareness? Because I want to talk about this thing at the end, and now the question is here. So I'll just talk about it and end the conversation. So obviously, Smart Choice, jo hai, we are doing a lot when it comes to raising awareness. We are not just here to, become a platform where you can buy insurance and become another platform where you can just sell insurance. That is our objective. That is how we stay commercially viable, and we want to do that because that tells us that whatever we're doing has an impact because people are buying it. So that platform itself has to serve. But the bigger purpose, the bigger goal is to increase the penetration of insurance and our role, the way we can play it. So we are doing a lot of content. We are generating a lot of content. हमने कुछ videos भी निकाली है in the last few weeks, and inshallah एक तकाफुल पे हम video निकालने जा रहे हैं, which will be live in I think next week. And it will explain the basics of takaful in terms of where it came from, what is the concept of it in a very layman term. बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती कि तकाफुल क्या है, इंश्योरेंस क्या है, क्या फ़ायदा है, क्यों नहीं है. So उन मिथ्स को हम थोड़ा सा जो ना आसान करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं. So we are doing that. We are doing sessions like these with great personalities like Azeem Pirani sahab, and we'll inshallah be doing more sessions as we go along. Thank you, Azeem sahab, for giving time. It No was a problem. My pleasure. pleasure having you, taking our time on Saturday during fasting, and I'm sure it was. I think it was great energy all around. जो लोग जिन्होंने participate किया. Thank you everyone for asking questions, making it very interactive and very engaging. And inshallah, we will be doing more sessions. Azeem Saab, thank you again for being here. Thank you. Take care, ji. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.